पता है क्यों? Because we have seen the evolution of the technology. ठीक है, मुझे याद है कि मैं जब 5th-6th क्लास में था, आई यूज टू गो टू द आर्केड शॉप और वहाँ पे टोकन लेता था और टोकन से उस बड़ी सी आर्केड गेमिंग में कॉइन डालता था और वहाँ से गेम्स खेलता था. बट नाउ वी हैव दैट ऑन अ सिंगल कंप्यूटर जिसमें सारी गेम्स हैं और इवन बेटर VFX देन दैट. द सेकंड पॉइंट इज दैट के वी हैव सीन द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेल, ठीक है, जो कि हम पेपर पे लिख के सेंड करते थे, और नाउ वी आर ऑन ईमेल्स. ठीक है, और इवन द इंटरनेट, आई रिमेंबर तकरीबन 15 मिनट का फासला होता था मेरे घर से एक एक्सचेंज से वहाँ तक जाता था और 100 रुपये का कार्ड जो है ख़रीदता था इंटरनेट के लिए और उसको स्क्रैच करके, और डायल अप कनेक्शन होता था तब इंटरनेट का. तो डायल अप कनेक्शन इवन 15-20 मिनट तो सिर्फ कनेक्ट होने में लगते थे, और फिर उसके बाद जो हमारा टेलीफोन होता था उस पे जो है वो अजीब से साउंड्स होते थे जब भी इंटरनेट कनेक्ट होता था. Well, the point is ke we have seen this evolution in the technologies, in the technology. So now we are living in a technology-based world, right? And there are some truth about that we are going to discuss in this, and that then are going to cover what is the hacking in general. I'm not talking about the computers, hacking in general, or uske baad we'll cover to the what ethical hacking is. Okay, and then we will cover the fundamental of information security. Information security, don't get confused in that. You can say that it's also, you can say that it's just security, or इस point और इस agenda का मतलब ये है कि we will cover कि हमें security क्यों ज़रूरी है. मतलब अगर हम सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो उससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारे एम्स क्या होंगे अगर हम सिक्योरिटी चाहते हैं. उसके बाद वी विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि हैकर्स जो हैं या फिर ये जो साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं फॉर स्पेसिफिक वेज और हैक्स और ट्रिक्स, तो उनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर दिस फेमस टर्मिनोलॉजीज आर. और उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्नोलॉजी ट्रायंगल. ठीक है, वी विल डिस्कस दैट के what is a technology triangle. So no, it's not Bermuda Triangle, but I wish it could, but still it's a technology triangle. And then we will discuss the security threats. So this is the main point we will be discussing के हमारे system को, हमारे phones को, हम as a human क्या क्या हमें threats हो सकते हैं. ठीक है, threats in a sense के क्या वो तरीके हो सकते हैं जिनसे कोई हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है, हमारी डेटा ले सकता है, etc. So we'll discuss in deep in that part. And finally, because हम सारे सुनते रहते हैं ये हैक हो गया, वो हो गया, डेटा ब्रीच हो गई, XYZ, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है और एक स्टेप का काम नहीं है. ठीक है, तो सर्टेन हैकर्स हैव टू गो थ्रू दी फेजेस. तो वी विल डिस्कस कि एक हैकर जो है वो कितने फेजेस में से गुजरता है तब जाके उसे कोई एक्सेस मिलती है. व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज हमारा जो नॉलेज है अबाउट दी साइबर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग कल्चर, वो सारी आती है मूवीज से. ठीक है, और जो मूवीज में सीन दिखाए जाते हैं या जिस तरह से हैकिंग को पोर्ट्रे किया जाता है, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, इवन के देयर वाज मूवी सबने देखी होगी, मिशन इम्पॉसिबल, राइट? तो ही वाज लाइक कि मुझे जो है वो रशियन सैटेलाइट हैक करनी है, एंड द अदर मिनट ही वाज लाइक आई मीन. सो दिस इज नॉट द केस. ठीक है, तो व्हाट आर द phases that a hacker go through to gain the access, इसमें हम वो डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे. और उसके बाद जो है बेसिकली दो चीज़ें और हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ एजेंडा की स्लाइड्स में. वो ये है कि इसके बाद वी विल सी अ डेमो, एक छोटा सा डेमो, एक वेब एप्लीकेशन होगी जिसमें एक वर्नेबिलिटी है और वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट दैट वर्नेबिलिटी ताकि हम एक्सेस गेन कर सकें. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस टर्म्स, हम आगे जाके मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा. Okay, so because we are living in the technological world, तो उसके कुछ डाउन साइज भी हैं. ठीक है, because there's
हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, या अच्छाई या बुराई। तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रहने के जो डाउन साइड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो एनी गेसेस गाइस के पर ईयर साइबर क्राइम में कितने विक्टिम्स हो सकते हैं? एनी गेसेस, प्लीज लीव इन द चैट बॉक्स। एनी रफ गेसेस, यू डोंट हैव टू बी राइट, इट्स ओके, जस्ट गिव मी योर गेस कि आप क्या सोचते हो कि कितने विक्टिम्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स मिलियन, गिव मी अ नंबर, गिव मी अ फिगर, इट डजंट मैटर, जस्ट गिव मी वन। 10 million, okay, any other guesses? Guys, please, I'm trying to make this session interactive ताकि हम दोनों बोर ना हो जाएं, क्योंकि मैं जिस भी साइबर सिक्योरिटी के सेशन में गया हूँ जवाइयाँ आती हैं बस। Yeah, so in millions, and to be exact, there are 566 million, and this is not the accurate, you can say, or the exact number stats, because still these stats are little old, but I can assure you कि अगर recent report आएगी भी तो number इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। Okay, so let's break that down. अगर जो हमारे पास जो है 566 million जो है वो per year victims हो रहे हैं, तो that means के एक दिन में हमारे पास around 1.5 million victims हो रहे हैं, और तकरीबन एक सेकंड में हमारे पास 18 विक्टिम्स हो रहे हैं। तो गाइज इवन के इस सेशन के दौरान, जो कि अराउंड 45 मिनट्स होने वाला है, यू कैन इमेजिन कि कितने लोग उस वक्त हैक हो चुके होंगे, राइट? इवन कि जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी कहीं पे कोई बंदा जो है वो हैक हो गया हो। सो और उसके बाद जो है when these hack happens, इसमें बेसिकली जो आइडेंटिटीज हैं वो भी एक्सपोज हो रही होती हैं। सो इट्स अराउंड 657 मिलियन आइडेंटिटीज जो हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं। इस पे मैं थोड़ा सा लिटिल में बाद में आपको बात करूँगा इस पे, आइडेंटिटी एक्सपोजर पे, क्योंकि रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा देयर दो हैक्स हुए थे। एक हुआ था के इलेक्ट्रिक में, जिनकी डेटा डंप हुई थी, और रिसेंटली करीम एप्लीकेशन, अगर आप जानते हो तो उनकी भी डेटा जो है आइडेंटिटीज एक्सपोज हुई। तो इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ कि हाउ वी कैन टैकल दी सिचुएशंस, ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें। ओके, सो नॉट इवन इंडिविजुअल्स बट आल्सो इज कंपनीज, ठीक है। और द डेटा ब्रीचिंग जो है वो बेसिकली वन ऑफ द मेजर इश्यूज, और ये पिक्चर्स जो हैं यू गाइस कैन सी इन आवर मार्केटिंग कैंपेन एज वेल। तो दी इंडस्ट्रीज जो कि टारगेट हो रही हैं साइबर सिक्योरिटीज कैन रेंज फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंकिंग, बिजनेसेस एंड एजुकेशन एज वेल। तो इट्स लाइक इट इज़ टाइम दैट नाउ जो गवर्नमेंट है उसको ये चीज़ें सीरियसली लेनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी सॉलिड यू नो वे नहीं है टू रिपोर्ट दीज काइंड ऑफ क्राइम्स, ठीक है। इवन के लेट्स से आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को लॉ में इंटरेस्ट है कि नहीं, बट अगर मैं जो है वो yes, these images are from recent news, and let's say अगर मैं जो है वो बाइकिया का एक कैप्टन हूँ जिसकी डेटा लॉस हुई है, तो कानूनन मैं बाइकिया को सू कर सकता हूँ उसके लिए, कि बिकॉज जब मैंने इसका प्रोडक्ट स्टार्ट किया था तो वी कम टू द एग्रीमेंट जिसमें ये था आई विल यूज योर प्रोडक्ट, आई हैव टू एग्री टू योर टर्म्स, और प्लस में देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमें और करीम विल बी ऑन द पैक्ट कि मैं आपको अपनी डेटा दूंगा इंक्लूडिंग ईमेल, नेम, नंबर, ईटीसी, और आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे और उसको आप I am so sorry to disturb you guys, but I'm seeing a camera here, which I don't know what he's trying to do, but please, can you turn it off? It will be very helpful. Nasib, to be exact. Could you please turn your cam off? Thank you. All right. So let's say there is an example कि आपके घर में चोरी होती है, ठीक है। तो आप कहाँ पे रिपोर्ट करोगे? Obviously, we'll go to the police. But let's say आपके पास क्रेडिट कार्ड की
अचानक से आपके पास मैसेज आ रहा है कि इतनी ट्रांजैक्शन हो गई आपके क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, फिर आप कहाँ जाओगे? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इवन के चलो हाँ ठीक है, सब कुछ कहेंगे कि यार मैं बैंक को फ़ोन करूंगा और बैंक जो है वो मुझे रिफंड करेगी, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली राइट, लेकिन उस बंदे का क्या जो कि पैसे लेके भाग गया? ठीक है, तो गवर्नमेंट हैव टू बी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स, ताकि we all can create a secure environment in terms of um, cyber things or an internet. So this is my question to you. How protected do you feel? Okay, so you can answer me in the chat. You can use a scaling from 0 to 10. 0 means you don't feel any protected and 10 means you feel protected. So please guys, let me know, what do you think? 5, 1, okay. Okay, great. So that means we are most of the people don't know how protected they feel or how they can defend yourself. So let's, yeah, you are right. Okay, so next is there is a quote by Sun Tzu, and he wrote a book called Art of the War. So he says that if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of the 100 battles. That's so true. If you know your enemy and you know yourself, you don't have to fear about the results. But but then the second part is, if you know yourself but not know the enemy, the every victory gained you will suffer a defeat. That's the truth. If you don't know who the hacker is, who's your enemy is, or what they are trying to do, how they are coming to you, and because you don't know your enemy, of course it's sure you will defeat, you will suffer a defeat. तो इस सिनारियो में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि हम बुरी तरीके से नहीं हारे, यू नो। चलो आई नो आई विल फेस द डिफीट, पर कितनी बुरी होनी चाहिए, so we can control that. Okay, so the last part is, if you know neither the enemy or not yourself, you will succumb in every battle. That's true. If you don't know yourself and not know your enemy, there's very likely no chance you are going to win this battle. So this is why we have to understand the ethical hacking and hacking, so we can defend ourselves. Okay, so let's define the hacking. In general, if we see the hacking, it's just hacking an object. It doesn't matter. It could be a computer, a hardware, okay, and make them something, make them to do something that they are not designed to. ठीक है, आई एम श्योर आप सब लोग टिकटॉक पे देख रहे होगे, दे आर यूजिंग अ बॉटल्स टू मेक यू नो पॉट्स फॉर द प्लांट्स, दे आर मेकिंग रोप्स। तो जो बॉटल का ओरिजिनल एस्पेक्ट है, दैट इज नॉट डिजाइन टू क्रिएट अ रोप, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, उसको उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मैनिपुलेट करें ताकि वो हमारे किसी काम में आए। तो जनरली दिस इज अ हैक। एंड व्हेन इट कम्स टू द कंप्यूटर, when you try to make a computer do that is not designed to do, जैसे किसी और की डेटा चुराना, okay, किसी और को नुकसान पहुंचाना, तो that consider as a hacking, जो कि ethical नहीं है. So what's the difference between the ethical and non-ethical? That is के when you are performing an ethical hack, you are basically authorized. Okay, you are authorized to attempt to gain the unauthorized access. It means के अगर let's say मेरा फ्रेंड है और मैं उसके कंप्यूटर को हैक करता हूँ बिना उसकी इजाज़त लिए, तो that is considered as non-ethical and it's also a crime, right? और लेकिन वो बंदा कहता है कि आई आई अथोराइज यू, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम मेरे कंप्यूटर को हैक करो ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या क्या नुक्स खामियां हैं और मैं उसको सुधार सकूं। तो दिस प्रोसेस कैन बी रिगार्डेड एज एथिकल बिकॉज यू आर अथोराइज्ड, जिसकी जो विक्टिम है वो आपको बेसिकली वो पावर दे रहा है, इजाज़त दे रहा है हैक करने की। So that will be the ethical hacking. So the major difference between the ethical and non-ethical hacking is law. When you do non-ethical hacking, you are breaking a law,
and if you are not if you are doing ethical hacking, you are not breaking any law. ठीक है, और मुझे पता नहीं अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, अगर आप किसी भी सिस्टम को हैक करते हो तो आप बेसिकली दो साइबर क्राइम के लॉ को ब्रेक करते हो। ठीक है, पहला लॉ कौन सा है कि आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हो किसी को अटैक करने के लिए, दिस इज द फर्स्ट लॉ जो आप तोड़ रहे हो। और दूसरा जो लॉ है वो ये है कि आप किसी दूसरे सिस्टम को अटैक कर रहे हो और उससे वहां से डेटा या अनऑथराइज्ड जो भी एक्सेस है वो ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आप पकड़े गए वाइल डूइंग नॉन एथिकल हैकिंग तो आपके आपके ऊपर दो चार्जेस होंगे। ठीक है, पहली चार्ज क्या होगी, यू यूज्ड अ कंप्यूटर to perform the hack, and second you used a hack to gain the access or data or privacy, whatever it is. So keep in mind the major difference is law, and non-ethical we are breaking the law, and ethical we are not breaking any law. Cool. So the other thing is that, okay, then we are trying to secure ourselves, we are trying to secure our organization. So what is the aim of it? Okay, why we need to secure our things? The first thing is authenticity. Okay, what do I mean by authenticity? Let's say Bruce Wayne, okay, tries to log in and try to get access to resources. Okay, and we want to make sure that actually Bruce Wayne is trying to access it. ठीक है, इसका मतलब ये है यू कैन से दैट अगर मैं अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर रहा हूँ तो उस सिस्टम को ये मेक श्योर करना चाहिए कि मैं ही हूँ, मैं ही ब्रूस वैन हूँ या XYZ हूँ जो इस डेटा या फिर इस सिस्टम को एक्सेस कर रहा हूँ। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का पहला एम ये है टू प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी। द सेकंड इज टू प्रोवाइड इंटीग्रिटी। द प्रोटेक्शन you can see this as protection as well. इसका मतलब ये है कि जिस सोर्स को हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली एक वैलिडेटेड हो या फिर वो ट्रस्टेड हो। लेट्स से अगर मैं अपने अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और वहाँ पे मुझे जो इंफॉर्मेशन दिख रही है, मेरा बैलेंस, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर, ETC, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वैलिड है। ठीक है, बिकॉज कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वी कैन मैनिपुलेट दोस यू ताकि उनको लगे कि उनके पास या तो ज़्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं, वट एवर। सो जो इंटीग्रिटी है वो प्रोवाइड करने, सिक्योरिटी का प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि वी विल सी कि जो भी डेटा हम देख रहे हैं दैट इज वैलिड। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इज अवेलेबिलिटी। Availability you can see in as a 24/7 service. Let's say अगर बैंक अकाउंट का एग्जांपल ही दिया जाए तो when I'm trying to log in या फिर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो किसी भी किस्म का डिनायल ना हो एक्सेस में, मैं जब भी चाहूँ वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा ताकि कोई भी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ना हो पाए उस पर। अगर मेरा कस्टमर जो है वो 24/7 उसके पास जो प्रोडक्ट है जो मेरा वो अवेलेबल हो। So this is what I mean by availability. And then we have the fourth point is confidentiality. It's because as a website owner, अगर मैं आप लोगों की emails collect करता हूँ, आपके CNICs collect करता हूँ, आपकी CV collect करता हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखूँ। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू सिक्योर ताकि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिले। एंड द लास्ट थिंग इज के देयर इज नॉट रेप्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डेटा, कोई भी फाइल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी उसको चेंज करता है, उसको एडिट करता है, तो हमें पता चले कि ये किसने एडिट किया है और किस वक्त एडिट किया है। बेसिकली कंपनीज रिलाइज ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स टू डू दैट। इट्स जस्ट लाइक जो भी प्रोग्रामर्स है दे कैन रिलेट, अगर गेट यूज कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली सी के कौन सी कमिट हुआ है और किसने किया है। तो इट्स लाइक के जो भी चेंजेस कर रहा है इट शुड बी ऑन्ड। ठीक है, that's it for the security. Then we are trying to cover some terminologies in terms of cybersecurity. These are the terms you should be aware of, and I know that most of guys maybe you are already aware of that, and maybe some of you are not aware of that. So let's go through it.
The first is exploit. Okay, so you think about that 1 second. What do you mean by exploit? It's actually a way of compromising security. Okay, it doesn't matter. It could be unauthorized card access to open a door. Okay, or maybe I am trying to interrogate somebody. This is also called exploit. So I could implement, or I can take advantage of an exploit. Okay, it's simply the way of the reaching the security of some type of some system through some type of vulnerability. That is called exploit. Okay, so let someone say my website has been exploited. तो इसका मतलब ये है कि someone took the advantage of vulnerability and they have gained the unauthorized access. You can say that is exploit. The second thing is hack value. This is the interesting one because let's say I am a hacker and I am trying to scan a network of an organization. ठीक है, तो उसमें लेट्स से मुझे मिले कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 कंप्यूटर्स हैं, कोई विंडो XP पे है, कोई विंडो 7 पे है, कोई विंडो 10 पे है, कोई विंडो 11 पे है. ठीक है, तो मैं एज अ हैकर आई हैव टू असाइन सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू टू देम. ठीक है, और एज अ हैकर पर्सपेक्टिव जो सिस्टम जितना आउटडेटेड होगा उतना फायदा है मेरे लिए टू एक्सप्लॉइट इट. ठीक है, क्योंकि वो पुराना है, उसमें पहले ही वल्नरेबिलिटीज हैं और जो कि कंपनी उसको मेंटेन नहीं कर रही है. तो XP इज लाइक ए पीस ऑफ केक और विंडोज 7 इज पीस ऑफ केक. लेकिन जब बात आती है 10 और 11 पे तो नाउ थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसके जो मेंटेनर्स हैं वो उसको अपडेट कर रहे हैं, वो उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसकी टेक केयर कर रहे हैं. Okay, so this is what I mean by hack value. And then this term you probably heard of is vulnerability. So vulnerability can be defined as a weakness in the design or weakness in the implementation of the system. Okay, so whether a system is hardware or anything that dealing with the IT environment that has the weakness that could be exploited is called vulnerability. So in simple terms, it's just a weakness. It could be in design or in implementation of that system. And then we have something called zero-day attack. This is interesting as well. So these are those attacks of which company knows that these vulnerabilities we have, but they have not been patched yet, or that they have not been updated yet. Okay, let's say if Microsoft figure out 3 months from now that there is a vulnerability to one of their operating systems. So until they come up with a patch, every attack that thrown on that machine is referred as zero-day attack. Okay, and then we have last but not least is daisy chaining. Okay, so what do I mean by daisy chaining? I think it will be more easy to understand if I explain it in an example. Okay, so let's say I have scanned a network and I found there is a window XP on that, or there's a Windows 7 on that, and I found out there is a vulnerability. I have gained the access of that. So अब ये जो मेरा computer है, I completely on it. ठीक है, मैं इसके पास इसके अंदर घुस चुका हूँ और पूरी एक्सेस इसकी जो है वो मेरे पास है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, I will utilize that system or that PC जो मैंने हैक किया है to attack other systems, right? ताकि लेट्स से अगर जिस कंपनी को मैं हैक कर रहा हूँ दे आर ट्राइंग टू ट्रेस मी बैक, तो वो बंदा फंसे जिसका कंप्यूटर पहले से ही हैक हो चुका है. देयर इज नो ट्रेस ऑफ मी के मैंने जो है उसका कंप्यूटर यूज करके किसी और पे अटैक किया है. सो दिस इज कॉल्ड daisy chaining. Okay, so after terms, every software developer or every programmer in technology or IT world face this triangle. Okay, so the first thing is GUI, or we can say usability. Okay, the second corner we have is functionality, and the third is security. Okay, so let's say
Can you guys see the laser dot on my screen? Cool. So this is a perfect balance between all these triangles. Okay. When you try to move, let's say from functionality and security to usability, okay, you are improving the usability. तो इससे इसका जो बेहतरीन एग्जांपल ये है वो हमारे राउटर्स हैं. ओके, राउटर्स आर इजी टू कॉन्फ़िगर, दे आर प्लग एंड प्ले. ठीक है, इनकी यूजेबिलिटी ऐसी है कि भाई कंप्यूटर राउटर लगाओ, पावर ऑन करो एंड बूम, आपका जो है वो सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, बिकॉज दे कॉन्फ़िगर ऑल द सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट. ठीक है, विच इज़ अ बिग मिस्टेक. आपको वही फीचर्स सिर्फ इनेबल करने चाहिए दैट जो आप यूज़ कर रहे हो, बाकी फीचर्स को ऑन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो व्हेन यू गो फ्रॉम द अपसाइड टू द यूजेबिलिटी, आप फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हैं. ओके, and when you try to go towards the security, तो फिर usability और functionality जो है वो annoying हो जाती है. Let's say you all have experience in the Windows 11, right? जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो क्या आता है कि यहाँ पे user actions security आता है कि are you sure you want to do this, right? So this is a step of a security, ताकि जब भी कोई malware execute करे तो उसके पास ये ऑप्शन आए कि आर यू श्योर ऑफ दैट, एंड इफ यू आर सेइंग कि यस आई एम श्योर, दे विल आस्क फॉर योर पासवर्ड, एंड दिस वे they won't be able to install any kind of malware to your system. Okay, so it might increase the security, but it hides the usability and the functionality of the system. So if you're an organization, then you have to make sure you make a perfect balance between this triangle. Otherwise, if you are trying to lack one of these, then you should know what should be the cost of it, and if you're risking that cost, then that's totally fine. So one of the great example, if we go from usability to security, we'll get systems like operating system like Linux. They are most secure, but they does not have the functionality and usability as it should be. But if we go from usability, you will see the Windows, and they have the functionality or security. These both are at risk. So it's all about the balance, or what you can risk for it. Okay, that leads me to a quote. Carl Sagan, he said that we are actually living in the society that is so dependent on the science and technology, that in which hardly anyone knows about the science and technology. And this is so true nowadays. Okay, everyone knows कि हम साइंस टेक्नोलॉजी रह रहे हैं, लेकिन this pace, just this speed जिससे technology evolve हो रही है, everyone is not able to grasp on. Okay, so which leads to the next topic, that is threats, because we are not able to grab all these domain of the technology that have been thrown to us, that creates threats. Okay, so I might be wondering, even ke काफी people जो के come across हुए हमारे साथ, they always say that, okay, what could possibly be threat in my network? हाँ man, तो what do you guys think? आपके network में क्या threat हो सकता है? Okay, and the second question that I mostly come across is के ऐसा कोई ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं है मेरे कंप्यूटर में, आई डोंट केयर इफ आई गेट हैक. तो इसका आंसर भी मैं लास्ट में दूंगा कि what you can lose even if you don't have anything. Okay, so the threads that can be created on a network or created to you is first is your host. Okay, the host here, I mean the system that you are using. Okay, it could be Windows, it could be Linux. Oh yes, even Mac is not so secure that you think it is. So host created threads for you. This is the one channel that is created. Okay, because every computer or every operating system responds in a different way. If I try to communicate with a Windows server, it responds different way. But if I try to communicate with a Linux server, it responds in different way. So in this way, I get to know कि जो मेरा victim है वो कौन सा operating system चला रहा है. Okay, so the next thing could be threat is natural.
Okay, natural by means it can be earthquake or floods or natural disaster जो आपके डेटा को एज अ कंपनी आपके डेटा को लॉस पहुंचाते हैं. Okay, so this is also a threat to your security. अगर आपके पास बैकअप्स हैं, you always should have a backup. अगर बैकअप्स नहीं है और लेट्स से सडनली यहाँ पे फ्लड आ जाती है और आपकी सारी डेटा जो है वो खराब हो जाती है या कस्टमर्स की पूरी डेटा खराब हो जाती है, तो it's going to be a big loss. So even indirectly, but the natural threats are considered as well when you create the secure environment for your organization or workplace. The next is physical. Okay, the physical threats can be like let's say someone stole your phone, someone stole your computer. ठीक है, तो जब कोई भी आपका कंप्यूटर इंस्टॉल कर देता है तो उसमें आपके आपके खिलाफ काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो कि वो गेन कर सकता है टू प्लान अ नेक्स्ट अटैक, राइट. सो द स्टॉलन इज वन ऑफ द बेस्ट केस ऑफ द फिजिकल थ्रेट्स दैट जो आपकी डेटा को या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है. इवन फिजिकल और maybe I'll talk in the humans one. Okay, the next one is applications. ओके, सो एप्लीकेशंस वी ऑलवेज नो कि हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा सा कल्चर है कि वी ऑलवेज यूज द क्रैक सॉफ्टवेयर, क्रैक एप्लीकेशंस. ठीक है, आईडीएम इवन दो यू नो इट्स जस्ट 1200 पर ईयर, फिर भी हमें जो है वो क्रैक करना होता है, उसको क्रैक यूज़ करना होता है. तो these type of applications जो क्रैक हैं, that creates a threat for you. They are not as secure as original or a paid version because इनके कोडिंग में, इनके सिस्टम में जो है वो मैनिपुलेशन की जाती है ताकि उनको लगे कि वो पहले से ही रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, when something is for free then you are the product, right? तो लेट्स से अगर आपको एप्लीकेशंस फ्री में मिल रही हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो सीन होगा, राइट? इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है. देयर इज ऑलवेज सेकंड साइड टू इट. ठीक है, तो मेक श्योर यू अवॉइड दैट. That's a big one. And the next is the human. Okay, so by human, in terms of organization, it could be your malicious employee. ठीक है, जो आपके साथ जेलस हो, आपकी कंपनी के साथ जेलस हो, या फिर इट कुड बी अ पर्सन जो किसी और के साथ मिला हो, कंपनी के साथ मिला हो टू रूइन योर. बिकॉज जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो वी कैन गो इनटू द बिल्डिंग, और जब बिल्डिंग में इन हो सकते हैं हम, then there are ton of hacks. Even we can use USBs to create malware, we can insert CDs, we can intercept a network. काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. So this is one possible threat when you have to see, that is the employees. Second threat could be the lack of training. Okay, so if you're a business owner and your marketing guy does not know what is a cyber security or what are the mistakes I'm making, ठीक है, तो that could create a big threat to your organizational network. Okay, so there should be a perfect training for each one, even the necessary training के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. If not, I know the marketing guy cannot go deep in technological stuff, but at least they should know कि मुझे जो है वो crack software install नहीं करना in organizational system. Okay, so last is actually the network itself, जो कि router है और router से router to router communication होती है, and we can a person or hacker और जो भी interest है person of interest है that can intercept your network, और वो देख सकता है कि आप कौन सी request कहाँ भेज रहे हो, और they can even middle आपकी किसी भी communication के mid में आके, जिसको man in the middle कहते हैं, वो प्रिटेंड कर सकता है कि आप जो है वो डायरेक्टली सोर्स से बात कर रहे हो और बीच में वो सारी जो है वो कन्वर्सेशंस को सुन रहा होता है. ठीक है, नेटवर्क के अंदर द सेकंड थ्रेड इज कुड बी इज स्पूफिंग. स्पूफिंग इज लाइक के कोई भी एक सिस्टम आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाए और दे प्रिटेंड कि वो एक्चुअली वो नहीं है जो वो दिख रहा है. दैट मीन्स कि अगर मैं किसी भी कंपनी में जाके अपना रास्पबेरी पाई कनेक्ट करता हूँ तो सिस्टम पे दिखेगा कि हाँ भाई एक रास्पबेरी पाई जो है वो कनेक्टेड हुआ है,
ठीक है, बट मैं उसको स्पूफ कर सकता हूँ ताकि उससे लगे कि नहीं ये तो जो है वो लेट्स से एक आकाश है हमारे मार्केटिंग का उसका कंप्यूटर है, राइट? सो दिस इज द स्पूफिंग. These are the possible threats you or your company can get. Okay, so um, how this actually happens, right? यानी कि अगर जे कोई भी सिस्टम कंप्रोमाइज होता है तो व्हाट आर द वेज, वो स्टेप्स क्या है, वो क्या तरीका है, वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू एक हैकर जो है किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द फेजेस, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ. द फर्स्ट थिंग इज दैट आई वांट यू गाइस to answer me this question. What do you think is the most secure system? If you are confused about the system here, you can take it as an operating system. आपको क्या लगता है कौन सा operating system जो है is most secure? You can just leave your answer in chat. Okay, I'm hearing Linux. Jose says no one. Linux, Kali Linux, iOS. Okay, so I guess nobody is going to say Windows. Am I right? Well, that's true. Or uska jo one of the reason you are not saying कि वो ये Windows है, because अगर आप मार्केट को देखो, मार्केट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिर्फ 10% जो मार्केट शेयर्स हैं वो iOS के पास है. ठीक है, और इवन के 70% ऑफ द शेयर्स और जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है. तो लेट्स से अगर मैं एक मेलवेयर राइटर हूँ, ठीक है, मेलवेयर कोडर हूँ, मेलवेयर प्रोग्रामर हूँ, और मैं कोई भी मेलवेयर प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा वो सिर्फ 10% को इफेक्ट करे? नहीं, राइट? मैं ये चाहूँगा कि वो जो है वो 70% ऑफ पीपल को हैक करे, ताकि मुझे इट्स क्रिएट अ लीगल काइंड ऑफ सिचुएशन. So this is why the Microsoft is a primary target for the hackers, and this is why nobody trusts them, right? Because they hold the majority of the shares. They have the majority of the customers. तो इस वजह से उनके पास ज़्यादा threats हैं और as compared to iOS or Linux. But the iOS or Linux are also not secure as you think. They are also hackable. Okay, so the most of the time I answer this question to my students is one that is never built, right? Because even iOS and Linux are hackable. Okay, so the second point I want to say that you cannot stop them. Okay, stop in a sense, because you never know when you are going to get attacked, right? आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर कब अटैक हो रहा है. और लेट्स जब अटैक हो रहा होगा, when you come to realize कि मैं I'm under attack, you can suddenly can't stop them. ठीक है, आप उनको लेट्स से आपने रियलाइज किया कि यू आर बीइंग हैक, और आपने कहा कि मैंने रिवर्स प्रोग्रामिंग की और मैंने उनको स्टॉप कर दिया या फिर उनको ही ट्रेस कर लिया. तो दिस इज नॉट द केस. यू कैन ओनली स्लो देम. ठीक है, लेट्स से आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सर्वर पे अटैक हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, you can put a VPN in front of your server, ताकि 70% लेट्स से 50% जो ट्रैफिक है वो VPN के थ्रू जाए, ताकि वो स्लो डाउन हो. ओके, या फिर अपने उस सर्वर को टेम्परली उस आईपी को डाउन करके वही सर्वर दूसरी आईपी पे चलाओ, ताकि वन अगर क्रैश भी हो जाता है तो स्टिल सिस्टम जो है वो आपका रनिंग हो. और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डीडोस अटैक, तो उनके पास काफ़ी टाइम है. वो I'll explain आगे कि किस तरह से, बट दे कैन अटैक यू 24/7. ठीक है, तो यू कैन नॉट स्टॉप देम, यू कैन स्लो देम. ठीक है, तो एज ए सिक्योरिटी और एज ए इंडिविजुअल जो हमारे पास जो मेजर जॉब है इज टू ईदर मिस डायरेक्ट देम और स्लो देम, जो कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ. ठीक है, वी कैन the one of the thing that I used to do is to trick
आई रिमेम्बर रिसेंटली मैंने एक फ्रीलांस ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी नहीं थी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके लिए किया था। तो मैंने क्या किया कि आई हैव मैनिपुलेटेड देयर सिस्टम्स इन वे ऑफ दे रिस्पॉन्ड। ठीक है, एक्चुअली दे आर रनिंग विंडोज, लेकिन जब वी आर ट्राइंग टू स्कैन इट, वो स्कैनर को बताता है कि आई एम अ लिनक्स। ठीक है, और जब वो बताएगा स्कैनर को आई एम अ लिनक्स, तो जो हैकर होगा उस वो बोलेगा अच्छा ये लिनक्स है, और वो सारे जो भी हैक्स हैं, तरीके हैं लिनक्स को हैक करने के, वो उस पर अप्लाई करेगा। अब क्योंकि वो लिनक्स है ही नहीं, वो एक्चुअली विंडोज है, तो दैट सिस्टम हैज मोर लाइकली चांसेस टू सर्वाइव अटैक। ठीक है, बट इट्स नॉट लाइकली द केस, हैकर्स आर स्मार्ट टू, बट you can misdirect or mislead them. It's all about mouse and cat show. Okay, sometimes mouse get caught, sometimes mouse run away. Okay, the one reason is for that is time, because we are busy in our daily lives, और हमें कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं अटैक कौन कर रहा है, किसने करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या तरीके लगाने, कुछ नहीं पता, राइट। बट जो अटैक कर रहा है उसके पास टाइम है, वो आराम से 15 दिन आपको सिर्फ फॉलो कर सकता है, आपको समझ सकता है कि व्हाट पर्सन यू आर, आपके क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, दैट लेटर यू कैन यूज टू अटैक यू। ठीक है, इसको हम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, मे बी वी कैन अरेंज सम सेशन ऑन दैट इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, तो they can literally have as much time as they want to prepare themselves for the attack, right? So as a security or as an individual, time is our enemy, but for the hacker, the time is valuable asset for them. All right, and the next thing is that a hacker only needs to find one opening, right? I mean, they just need to find a single vulnerability, a single flaw, a single weakness in the design, और we are ruined. पूरा system जो है वो हमारा hack हो सकता है, पूरा network hack हो सकता है. But as a security or as an individual, हमें क्या करना है? We have to cover all of them. ठीक है, तो this is why the security part is not as much as strong as compared to the attack one. But it's not के होना ही नहीं चाहिए. It's very important. It can save you from lethal breach. But still, the plus point is on the hackers side. All right. So the next thing that comes to it, that we can understand how they operate, and that is how we'll be able to provide a maximum security ourselves. Okay, so uh, I'll cover the steps in this, और जो हर स्टेप एज अ हैकर, जब मैं एक स्टेप से गुजरूंगा तो आई विल लर्न समथिंग अबाउट योर सिस्टम। ठीक है, और डोंट बी कंफ्यूज ओनली कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, इट कैन बी अ ह्यूमन एज वेल। ठीक है, तो जब भी मैं हर स्टेप से गुजरूंगा, आई गेट टू लर्न दैम। ठीक है, समटाइम्स दिस इंफॉर्मेशन आफ्टर ईच स्टेप इज वैल्यूएबल, समटाइम इट्स नॉट। ठीक है, लेकिन they have to go through these steps in order to make sure they are taking a perfect, or they are making a perfect plan to attack someone. Okay, the first one is reconnaissance. You can say that it's footprinting or it's fingerprinting. On a sense, we try to gather all the information we could, about our organization, about our victim. ठीक है, तो let's say अगर there is a company called XYZ, or this is my target, so the first step that I have to do is do the reconnaissance. मैं क्या करूँगा? I will go to the internet, YouTube पे जा सकता हूँ, there's public directories, there are IP informations, तो मैं देखूंगा कि उसमें कितने बंदे काम कर रहे हैं, और जो है उसमें अंदर कौन सा नेटवर्क है, कौन सा IPs हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और कौन कौन से बंदे उसमें काम कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वी कैन नॉट हैक द ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, क्योंकि वो दे आर मेकिंग श्योर कि वो हर वर्नेबिलिटी, हर एक्सपोजर को क्लोज रखें और कोई भी अटैक नहीं कर पाए। आई नो सिस्टम इज रोबस्ट, बट जिसके पास उस सिस्टम की एक्सेस है, दैट पर्सन कैन बी हैक्ड, राइट? तो देयर इज नो सच वे के यू से कि समथिंग इज अनहैकेबल, ठीक है? तो this is the first step. We have to gather all the information we could. Even कि आपने movies में देखा होगा, they go to see how many CC cameras there are, how many security guards there are, on which floor they have servers. ठीक है? तो all sort of information you need to gather in this step, in the first step, because as the Sue said, कि know your enemy. So this is where we know enemy in the perspective of attacker. Okay, so once we're done with all that information, then we start scanning their networks. I know they have the internet, and because internet is a network, जिसमें सब बंदे connected हैं, and even internet there are just numbers, right? तो then मैं try करूँगा कि इसके scan करूँ इस network को, इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से राउटर्स हैं, कौन कौन से स्विचेस हैं, क्या ये आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये अपने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे लेट्स से मैंने स्कैन कर लिया और मुझे पता चल गया कि वहाँ पे एक मार्केटिंग का बंदा है आकाश, और उसके पास जो कंप्यूटर है वो उस पर विंडोज 7 हुआ है, और उसका कंप्यूटर जो है वो अपडेट भी नहीं है, एंड देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी इन दैट, ठीक है? तो देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स, नाउ आई विल ट्राई टू गेन एक्सेस ऑफ दैट कंप्यूटर, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, उसमें जो वर्नेबिलिटी मैंने फाइंड आउट की है उसको एक्सप्लॉइट करूँगा, उस पर डिफरेंट अटैक्स करूँगा, थ्रेट्स सेंड करूँगा, ठीक है? ताकि मैं उस सिस्टम की एक्सेस ले सकूँ। चलो, तो लेट्स से वंस मैंने उसको हैक कर लिया, मेरे पास एक्सेस आ गई, तो देन सेकंड step, or sorry, the next step is maintaining that access, ठीक है? तो मेंटेनिंग एक्सेस के लिए मैं क्या करूंगा, उसके जो भी, लेट्स से मैंने जब उसको स्कैन किया था तो मुझे 5 वर्नेबिलिटीज मिली थी, ठीक है? और मैंने किसी भी एक को एक्सप्लॉइट कर लिया, लेकिन अभी भी वो 5 वर्नेबिलिटीज उस सिस्टम्स में हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन सारी वर्नेबिलिटीज को फिक्स करूंगा ताकि कोई और बंदा इसको हैक ना कर पाए, और सिर्फ मुझे ही जो है वो उसकी एक्सेस हो, ठीक है? और देयर इज अ टेक्निकल टर्म फॉर दैट, वी कॉल्ड इट बैकडोर, ठीक है? तो उस सिस्टम में मेरा बैकडोर हो कि मैं जब चाहूँ उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? उसके बाद है क्लियरिंग द ट्रैक्स। तो ऑफ कोर्स जब आप किसी और के कंप्यूटर में जाते हो तो there are some लॉग्स, ठीक है? फाइल को ओपन करना, सेटिंग को चेंज करना, ये सारी चीज़ें जब करते हो तो ये सारा जो ऑपरेशन है वो लॉग्स के फॉर्म में सेव होता जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि मैं सारे ट्रेसेस जो है वो रिमूव कर दूँ, ताकि आखिर उसको पता नहीं चले कि यार मेरा फोल्डर ये यहाँ पे पड़ा था, ये किसी यहाँ पे कैसे आ गया, वो सस्पिशियस ना हो, ठीक है? So the last part is that we have to clear that track. So this is how these are the 5 phases जिसमें जो है hacker perform करते हैं attack. Okay, so your bet is over. Of course, let's go to the demo now. Okay, can you guys see my screen? Are you seeing this application? Right? Uh, okay, so let's say this is the example. ये जो application है, they are basically designed to just understand के how a hack performs, ठीक है? या vulnerability किस तरह से होती है। तो there is a hypothetical case के हमारे पास book face है, of course Facebook नहीं लिख सकते थे ये, but book face है। तो there is a social network book face, और उसके ऊपर एक बंदा है बैन स्प्रिंग, ठीक है? दिस इज द प्रोफाइल ऑफ दैट बैन स्प्रिंग, और हमें क्या करना है, हमें इसको हैक करना है, ठीक है? वी हैव टू गेन द एक्सेस ऑफ दिस यूजर, ठीक है?
तो सबसे पहला काम क्या होगा, I'll try to gain its ID जो कि डेटाबेस में स्टोर हो, इट कुड बी द यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर नेम आप क्या कर सकते हो, URL पे जब भी देखोगे तो you will see either numbers or you will see either username like this. Okay, so we have to copy this because this is what we are utilizing to attack this guy. Okay, so the next is there is reset your password option on every website, ठीक है। आप सब लोगों ने देखा होगा जब भी आपको पासवर्ड फॉरगेट करना होता है, आप भूल जाते हो, तो देयर इज ऑप्शन कि आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो अब क्या कर रहे हूँ, इवन कि मैं ये नहीं हूँ बैन, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू सी कि उसके रीसेट पासवर्ड जो है वो किस तरह से, क्या फीचर्स रखे हुए हैं उसने SMS एक्टिवेट किया हुआ है या फिर उसने डेट ऑफ बर्थ यूज़ किया। रिमेंबर जब फेसबुक ने आया था और उसकी जो जो फॉरगेट योर पासवर्ड का जो मैकेनिज्म था उसमें वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछता था और 2 क्वेश्चन पूछता था जिसको हम सिक्योरिटी क्वेश्चन कहते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ डेट ऑफ बर्थ और द पेट नेम, मदर्स नेम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते थे, ठीक है। जो कि हम किसी को भी अगर हैक करना है तो लेट्स से जस्ट गो ऑन अ कप ऑफ टी और बात करते करते वो सारी चीज़ें मैं उससे पूछ सकता हूँ और ही कैन इजीली टेल मी, ताकि क्योंकि उसे नहीं अंदाज़ा भी नहीं होगा कि दैट कुड इंफॉर्मेशन कुड बी यूज्ड अगेंस्ट मी। So let's do it. I have entered the username and I am requesting a reset password. Okay, so now the Facebook or the book fetch will say okay, the 4-digit code is sent to your email address, log into your email and get that number. But the thing is कि क्योंकि मैं Ben Spring नहीं हूँ तो I don't have access to his email, ठीक है। तो what I can see now, I can scan or I can see try to find the weakness in this system, ठीक है। अब क्योंकि ये 4 नंबर का डिजिट है तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं वो 10 के हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जब भी कोई एक रिक्वेस्ट सेंड होती है तो बेसिकली वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा उस कोड के साथ। लेट्स ट्राई दिस। सो लेट्स से मैं कोई भी नंबर गेस करता हूँ 1 2 3 4। ओके, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, मुझे पता है नहीं रॉन्ग है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि ये कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है एंड आई विल हिट सबमिट, ठीक है। तो ये मुझे जाएगा कि भाई योर कोड इज इनकरेक्ट, ऑब्वियसली इट इज अनकरेक्ट। लेकिन जो काम की चीज़ ये है दैट इज आई कैन मॉनिटर इज नेटवर्क, ठीक है। सॉरी आई वेंट बैक। ओके, सो हेयर इज द पोस्ट रिक्वेस्ट जो कि इस URL पे गई और ये है वो रीसेट कोड जो कि इसने यूजिंग दिस URL सर्वर को भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे खुद 0001 002 003 004 नहीं टाइप कर सकता, राइट, ह्यूमन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन एक प्रोग्राम जो है वो ये सिर्फ 2 मिनट में काम कर सकता है। ओके, सो the next step is going to be okay, we will see okay, wait a minute, this is explaining the URL. Okay, so this is the software or you can say a script that is a web request repeater, और मैं इससे चाहता हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू हो वो 0000 हो और जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो 9999 हो, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट, पहले ये 000 लगाएगा, 001 2 3 4 4 और वहाँ पे एक टाइम आ जाएगा कि वो एक्चुअल कोड मैच हो जाएगा जो इस सिस्टम ने उस ईमेल पे सेंड किया है। एंड दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। Okay, we are brute forcing it, and there we go, this is the actual code that was sent to the email। और अब मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, राइट। सो अब मैं इसका पासवर्ड कोई भी रख सकता हूँ। सो आई हैव गेन द एक्सेस और अब इसका जो है वो पासवर्ड हैक हो चुका है और इसका प्रोफाइल जो है वो हैक हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हैक अभी हमने सिम्युलेट किया दैट वाज द रियल वर्ल्ड अटैक, ठीक है। और ये बेसिकली इंस्टाग्राम का एक वर्नेबिलिटी थी बैक इन, जब इंस्टाग्राम नया था तो ये वर्नेबिलिटी थी और जिसने भी इसको रिपोर्ट किया दे गेट टू रिवॉर्ड ऑफ 10,000 rupees। Okay, so this is how a simple attack happens in web on web applications।
Okay, so the last slide is my giveaway for you. It's the best practices I do for my own purpose, for my own use. ये सारी practices हैं जो कि मैं follow करता हूँ. So if you guys अभी चाहते हो तो you can take a screenshot now, और आपके पास सेव कर सकते हो. You can follow the security. Anyways, slides तो वैसे भी share की जाएंगी, but still if you want to take a screenshot, that's fine. And that's me. That's it. If you have any questions, you'll be asking in a minute. We'll open the question section, and if you want to try to contact me after the sessions, you can leave me your email on this email. Okay, so that's it for me. Over to you, GM. Okay, so I hope कि काफी कुछ सीखने को, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला था. And like again, still I am kind of afraid कि हाँ कभी भी हैक हो सकता हूँ. अब यह है कि चीजें पता चल गई हैं कि हम किस तरह खुद को सेव कर सकते हैं और पता चलती रहेंगी. So before we go into the question and answer session, I would request all of you guys कि आप please, हम एक feedback form share कर रहे हैं आपसे, जो राफिया शेयर कर चुकी है. Please go to that feedback form और हमें feedback दें कि आपको हमारा ये session कैसा लगा and what should we improve, और आगे हम कौन कौन से इस तरह के सेशंस लेके आए ताकि हम सब एक साथ सीखते रहें. ओके, नाउ like when you guys are answering the questions, please feedback form भी fill करते रहें. और अब अगर कोई questions हैं तो Mr. Qaisar is here with us for 15 more minutes, और कोई भी question है you guys can ask. You can actually use the feature in this Zoom. You can actually use the reactions and raise your hand. And once you will raise your hand, our co-host will unmute you, and then you can ask your questions. Even if you're just not trying to speak, you can also leave your question in chat box. That's totally fine. I'll answer them from the questions. And even if you guys like this session, and if you want us to create such practical based courses for you guys, and please let us know in the feedbacks, and we'll be happy to launch soon 100% practical case for being a ethical hacker or pen tester. Okay, so any question, guys? You can raise your hand. Okay, so there is a question from Muttahar Khan. Yeah, I'm just checking it now. Okay, so he is asking me that how can I start the career in the cybersecurity, and how can I make connections to cybersecurity expert mentors? All right, so the cybersecurity is really big domain, right? You have to be specific first. आपको decide करना होगा कि which part you are exactly going to work on or to make your career on. ठीक है? So as far as for ethical hacking concern, you can start with this website जहाँ पे मैंने अभी आपको एक beginner का hack दिखाया application. This website is really good for someone who is just starting the hacking scenes, and you will of course need the information of the networking. It's very important. You should get some courses on networking before you're going to start the cybersecurity, ताकि because जब आपको पता चल जाएगा कि how these computers are talking to each other, so you can easily find out कि now where I can fit in, या vulnerability क्या हो सकती है, किस तरह से मैं इस communication को exploit कर सकता हूँ. तो first you have to make sure you understand कि how this networking things going on. So I would suggest get start with the networking. Okay, once you understand the network, then select your area, whether you are going to be an expert on web applications, okay, or whether you are going to be expert on systems, or whether you are going to be expert on mobile applications or handheld devices, or you are going to be expert on what we say that malware programmer. Okay, so you have to decide first, but the start is learn the networking.
Okay, the second question is, would you mention that site again? Yeah, sure. I already have brought it. I'll just send it over here. There. It's not completely free website, but it offers you enough um, learning experience as a beginner. You can um, create free account here and start practicing your ethical attacks. How vulnerability and penetration testing work? It's actually works in that the steps that I have shown you. Once you have decided कि आपको किसको attack करना है, the second step is you have to gather all the information you can. उसके बाद you have to scan their networks, और जब network scan कर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन सा device use कर रहा है, कौन कौन सा operating system use कर रहा है. उसके बाद then you have to go to the internet, और वहाँ पे जाके आपको देखना है कि अगर ये system है और ये version है तो इसकी कोई vulnerability है कि नहीं है. ठीक है. देयर इज अ डेटाबेस ऑफ द वर्नेबिलिटीज जहाँ पे हर वर्नेबिलिटी पोस्ट होती है और अपडेट की जाती है, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो अगर इस वर्जन के लिए कोई वर्नेबिलिटी अवेलेबल है तो यू कैन एक्सप्लॉइट इट, उसको अटैक कर सकते हो. और उसके बाद once you attack it you gain the access, you clear your tracks, और उसके बाद that's up to you what you want to do with that system. How the brute force can't be used and so nowadays, kindly throw some light on the patches that could be. Yeah, basically now they have patched it, or jo one of the best um, 2FA we have right now is Google authentication. It's actually um, uses the time-based information to generate the code for it. So that is the बेस्ट पैच. और अदर द पैच जो है वो बेसिकली जो इंस्टाग्राम ने किया उसके बाद वो ये किया कि उसने जो रीसेट पासवर्ड करने की जो लिमिट्स हैं वो लिमिट कर दी कि आप अगर 3 गलत डाल रहे हो कोड तो उसके बाद कोड नया जनरेट हो जाएगा. तो दिस वे ब्रूट फोर्सिंग जो है वो पैच हो गई. उसके बाद नेक्स्ट वर्जन दे वांट और ईमेल वी कैन गिव. Okay, if you have a good knowledge about the networking, then there's a complete path for CEH. Try to search for a roadmap for CEH, Certified Ethical Hacker. It's by UC Council. You can go on their website, and there is a complete structure that you should cover in able to be a certified ethical hacker. So go to the UC Council and search for the CEH course. And once you will go to Google, you'll search the contents of the CEH course and you will know कि कहाँ से start करना है. Hello, sir. Let me know what type of hacker you are, because there are 3 types of hair: white, black, and gray. Actually, I'm a white hacker. I respect the law, so I'm a white hacker. Yeah, cool. Thanks a lot. My second question is, how can a hacker hide himself even after using the multiple dead points and real request location can still be traced? Yes, because every system that we use to make an attack has something called manufacturer ID, that we are referred to something called MAC address, right? तो ये जो information होती है ये basically हमारे जो hardwares होते हैं उस पे imprinted होती है. You cannot change it. You can spoof it, but इसको change नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो all you have to do, or you have seen कि जितने भी बड़े और hacks होते हैं, once hack is the complete, वो systems को जला देते हैं या फिर उस systems को टोर डाउन कुछ भी कर सकते हैं, जला मतलब उसकी एग्जिस्टेंस मिटा देते हैं, ताकि अगर वो ट्रेस बैक भी हो तो उस पर किसी भी किस्म के फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, ईटीसी कुछ भी जो है वो अचीव नहीं हो. तो दैट इज व्हाई वंस अटैक इज डन, क्लियर योर ट्रैक्स, burn your hard drive, burn your laptop, get a new one. That's it. And CEH, yes, CEH, Certified Ethical Hacker course by UC Council. Okay, GM, I think that's it for the questions.